इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल डेथ के बारे में। हम कब कहते हैं कि सेल डेथ हो चुकी है? Whenever a cell loses its nucleus, cell dies. The morphological hallmark of cell death is loss of nucleus, which occurs through nuclear condensation, जिसको हम pycnosis कहते हैं, nuclear fragmentation, karyohexis, and dissolution, karyolysis. There are two mechanisms of cell death, necrosis and apoptosis. नेक्रोसिस को इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस द डेथ ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो कि एपोप्टोसिस में नहीं होती। एक्यूट इन्फ्लेमेशन डज नॉट अकर्स इन एपोप्टोसिस ड्यू टू सम अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्रोसिस हमेशा किसी डिजीज़ या पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से होती है। इट इज़ नेवर ड्यू टू अ नॉर्मल प्रोसेस, इट इज़ नेवर फिजियोलॉजिक। So it is divided into several types based on gross features. Okay, so the first type of necrosis is coagulative necrosis. Necrotic tissue that remains firm, cell shape and organ structure are preserved by coagulation of proteins. Cell shape or structure of the organs disturb नहीं होता, it remains the same, but the nucleus disappears. As I told you earlier, that the hallmark of cell death is nuclear loss. So coagulative necrosis is the characteristic of ischemic infarction of any organ except the brain. होती है वहाँ पे coagulative necrosis होती है except the brain. As you can see in the picture, this is a normal picture and this is a picture with coagulative necrosis. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट टाइप जो है वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। नाम से जाहिर है कि जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड शेप में आ जाएगा। तो नेक्रोटिक टिश्यू दैट बिकम्स लिक्विफाइड विच अकर्स ड्यू टू एंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ द सेल्स एंड प्रोटीन्स रिजल्ट्स इन लिक्विफैक्शन। So, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन इन्फार्क्शन। Whenever blood supply to the brain is decreased, ischemia of the brain occurs, so then the necrosis that occurs is liquefactive necrosis. The proteolytic enzymes from the macroglial cells liquefy the brain. Second example is the abscess. Proteolytic enzymes from the neutrophils liquefy the necrotic tissue. Next example is pancreatitis. Proteolytic enzymes from the pancreas liquefy the parenchyma. As you can see in the picture, this is a picture of brain showing liquefactive necrosis, as you can see in this area. Okay, so the third type is caseous necrosis. नाम से जाहिर है caseous. Caseous means cottage cheese like. So it is a soft and friable necrotic tissue with cottage cheese like appearance. Caseous necrosis is a combination of coagulative and liquefactive necrosis. एंड केसेस नेक्रोसिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ड्यू टू ट्यूबरकुलस और फंगल इन्फेक्शन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर देयर इज caseous necrosis. It is cheese-like appearance. The fourth type is fat necrosis. In fatty necrosis, necrosis occurs in fat tissue, adipose tissue, and in that adipose tissue, there is chalky white appearance due to deposition of calcium. So fatty necrosis कहाँ पे होती है? That is characteristic of trauma to the fat in the breast, pancreatitis mediated damage of the pancreatic fat. Fatty acids released by the trauma
to the breast or lipase in pancreatitis join with calcium through a process called saponification. So saponification is an example of dystrophic calcification. So dystrophic calcification क्या होती है, जिसमें calcium deposits in dead tissues. In dystrophic calcification, the necrotic tissue acts as a nidus for calcification in the setting of normal serum calcium and phosphate. In dystrophic calcification, serum calcium and phosphate remains normal, but there is deposition of calcium in the dead necrotic tissue. So ये पिक्चर पेंक्रियास की है जिसमें फैटी नेक्रोसिस हो चुकी है, एंड आप देख सकते हैं कि इस पे चौकी वाइट अपीयरेंस आपको नज़र आ रही है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. Okay, so the next type is fibrinoid necrosis. Fibrinoid necrosis occurs due to necrotic damage due to the blood vessel wall. And how it occurs? It is due to the leakage of protein including fibrin. नाम जो है उससे जाहिर है कि fibrinoid necrosis, तो it will include fibrin as well. Like leakage of protein including fibrin into the vessel wall results in bright pink staining of the wall microscopically. So microscopically, how will fibrinoid necrosis occur? Bright pink stain. Fibrinoid necrosis is present, or it is a characteristic of malignant hypertension and vasculitis. So it is present in malignant hypertension and vasculitis. As you can see in the picture, this is a bright pink appearance of the vessel wall. Here, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे डिपोजिशन हुई है फिब्रिन की, ठीक है, ड्यू टू fibrinoid necrosis. Okay, so this is the last one, the gangrenous necrosis. Okay, so this is a type of coagulative necrosis, gangrenous necrosis. So coagulative necrosis that resembles mummified tissue, dry gangrene. ठीक है, तो it is a coagulative necrosis that resembles mummified tissue, dry gangrene. It is specifically for lower limb and GIT tract. Whenever coagulative necrosis or ischemia of the lower limb and GIT tract occurs, it is known as gangrenous necrosis. If this coagulative necrosis या gangrenous necrosis is superimposed by infection of dead tissues, the liquefactive necrosis ensues. तो liquefactive necrosis स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ वेट गैंग्रीन, वहाँ पे लिक्विफैक्शन ऑफ टिश्यूज़ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट necrosis and its types. In the next lecture we will study about apoptosis and the pathways.